everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 7, Cash Book. Today we will discuss about meaning of cash book. यानी कि cash book क्या है? Okay, what is the cash book? So its meaning is a subsidiary book is prepared to keep record of cash transaction. It is called cash book. यानी कि जो भी हमारे cash transactions है, वो जिस बुक में हम राइट करते हैं उससे हम कैश बुक कहते हैं. ओके, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. Cash receipts and payments are recorded in the cash and at the end of the given period, cash balance can be known from cash books. यानी कि हम इस कैश बुक से कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स के हो या चाहे पेमेंट्स के हो. यानी कि वो कैश रिसिप्ट यानी कि इनकम के हो या पेमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर से, वो सभी हम जो कैश ट्रांजेक्शन है वो सब भी ट्रांजेक्शन हम कैश बुक्स में राइट करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो असेट्स का हो, चाहे वो एक्सपेंस का हो. ओके, यानी कि एंड ऑफ द पीरियड, जो हमें पीरियड दिया गया होता है कि 1 मंथ के 15 डेज के या 3 months after या 1 years after, how many balance you have, we know easily that the preparing of cash book. Okay. यानी कि कैश बुक ये है हमारा जो उसका पर्पज है कि जनरल एंट्री और कैश अकाउंट दोनों के लिए सर्विस दे देता है. यानी कि कैश बुक सर्व्स द पर्पज of journal entry and cash account both, as cash book is prepared in the form of a ledger accounts. यानी कि हम कैश बुक एक अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर करते हैं, सो एक कैश अकाउंट का भी हमें दे देता है कि कैश अकाउंट हमें बनाना नहीं पड़ता अलग से. Then a debit of cash book is known as income or receipts and क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड. यानी कैश बुक में दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. जो डेबिट साइड है उसे हम इनकम और रिसिप्ट साइड कहते हैं, और जो क्रेडिट साइड है उसे हम पेमेंट साइड कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी एंड डिस्कस अबाउट यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक. यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर. इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग इन जनरल, सो देयरफॉर सेपरेट कैश अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट नीड. इट मीन्स कि हम जब भी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तब सभी कैश ट्रांजेक्शन हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट जनरल एंट्री के साथ. यानी कि जनरल एंट्री की भी जरूरत नहीं होती है जब भी हम सारे कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में राइट करते हैं. सो देयर इज नो नीड अ प्रिपेयर फॉर कैश अकाउंट. ओके, देयरफॉर कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ बोथ अ जनरल एंट्री एंड अ लेजर. It save time and labor. It means कि हमें जनरल और लेजर दोनों का बेनिफिट कैश बुक दे देता है, सो उससे हमारा समय और लेबर दोनों बच जाता है. सो वी दैट save of time and labor when we prepare cash book. Okay, then number 2, benefit of division of labor. यानी कि when we prepare cash book, when we maintain a cash book separately from the general, therefore responsibility of preparing it can definitely allotted a different person. यानी कि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें सेपरेट जनरल एंट्री राइट नहीं करनी होती है उसकी. That's why we given responsibility of preparing this cash book definitely allotted to
डिफरेंट पर्सन यानी कि किसी और पर्सन को हम कैश बुक प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं. ओके, एंड द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्टेन. उसके कारण हम जो लेबर का डिवीजन होता है यानी कि हम श्रम विभाजन का बेनिफिट ले सकते हैं. ओके, देन नंबर 3, कैश बैलेंस कैन बी नो. Obviously, all our cash transactions recorded in cash book, so we can easily know the how many cash balance. Okay, like cash balance can be known daily or at the end of the given period by maintaining the cash book. हम cash book में डेली भी बना सकते हैं. डेली कैश बुक बना होता है बनाते तो हम डेली जान सकते हैं कि हमारी कैश कितनी है. अदरवाइज हमने जो टाइम पीरियड दिया है उसके बाद हमारी कैश बैलेंस कितनी है वो हम इजीली कैश बनाते हैं तो जान सकते हैं. ओके, देन कैश एम्बेसमेंट यानी कि जो कैश की उचापत होती है वो नहीं होती यहाँ पे, यानी कि द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज वर्कड आउट डेली और एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड. Therefore, the physically cash balance can be compared with it, and if there is any error or cash embezzlement, then it can be known immediately. यानी कि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हम डेली बेस पे या सब पीरियड के एंड पे हम अपनी कैश को जो करंट कैश है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले रिकॉर्ड के साथ. यानी हम इमीडिएटली जान सकते हैं कि कैश एम्बेसमेंट हुई है कि नहीं हुई है. ओके, देन नंबर 5, इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट यानी कि व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक दैट टाइम बैंक अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड होता है. जैसे कि हम 3 columnar कैश बुक बनाते हैं तब, यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, द कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरियस डिफरेंट टाइप्स. If 3 columnar cash book is prepared, then the transactions of cash, bank and discount can be recorded. That's why separate bank account also need not to be prepared. यानी कि हम जब भी 3 columnar cash book बनाते हैं तो उसमें 3 columns होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट. तो हमें अलग से बैंक का अकाउंट बनाना नहीं होता क्योंकि बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम इसी 3 columnar जो कैश बुक है उसमें हम राइट करते हैं. ओके, सो नॉट टू नीड सेपरेट बैंक अकाउंट. ओके, now let's start types of cash book. यानी कि how many types of cash book? So here 3 types of cash book we prepare. First one is simple cash book, second one is 2 columnar cash book, and there is 2 columnar cash book is divided in 3 categories. First one is cash and discount columnar, second one is cash and bank columnar, and third one is bank and discount columnar, and mainly third type 3 columnar cash book. 3 columnar cash book has 3 columns: cash, bank or discount. Okay, now first discuss about simple cash book. In simple cash book, only cash transactions are recorded in the simple cash book. It means कि वहाँ पे हम सिंपल कैश बुक में क्या राइट करते हैं तो सारे कैश ट्रांजेक्शन राइट कर सकते हैं. ओके, यानी कि कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द सिंपल कैश बुक. As the format of cash book is like the structure of an account, it is divided in 2 parts. Then the left side of the cash book is known as debit side or receipt side, and the right side of the cash book is known as credit side or payment side. यानी कि हम जब भी कैश बुक
प्रिपेयर करते हैं सिंपल कैश बुक या कोई भी कैश बुक को कॉलमनर, तो उसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है यानी कि रिसीप्ट साइड्स होती है, और राइट साइड वो क्रेडिट साइड्स होती है या पेमेंट साइड्स होती है। यानी कि हम जब भी कैश comes in our business, that time we record it on debit side, so we call it receipt sides also. And when our cash goes from the business, that time we record it on credit side on left side. That's why we call the payment sides also. Okay? यानी कि cash amount, cash payment is never more than the cash receipts. इट मीन्स कि कैश पेमेंट है वो कैश रिसीप्ट से ज्यादा नहीं होते, बिकॉज ऑफ द बैंक बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इज डेबिट। ओके, डेबिट होता है कैश बैलेंस ऑलवेज, सो ऑलवेज कैश रिसीप्ट इज मोर देन द कैश पेमेंट। देयरफॉर इन द बिगिनिंग ऑफ द कैश बुक द कैश बैलेंस इज शोन एज balance brought forward or opening balance, okay, on the debit side of the cash book, and at the end of the credit end of the this account credit side closing balance is worked out and it is known as balance carry forward or balance closing balance। Okay, in short, in the cash book on the debit side, the opening cash balance and cash receipts are recorded, whereas on the credit side of cash book, cash payment and closing cash balance are recorded at the end। Okay, let's see its specimens of simple cash book। There is write down first heading cash book of 3, जिसका भी हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उसका नेम राइट करेंगे। देन आफ्टर वी राइट डाउन द फॉर्मेट। देयर इज 2 पार्ट्स इन दिस कैश बुक, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सो वी राइट डाउन DR and CR। DR means debit, CR means credit। Okay, then there is a first column is date, second column is particular यानी कि receipt, then थर्ड कॉलम इज रिसिप्ट नंबर, वो रिसिप्ट का नंबर होता है वो। देन LF मीन्स लेजर फोलियो नंबर, देन अमाउंट, एक साइड हुई डेबिट साइड हुई। ओके, देन क्रेडिट साइड पे सेम कॉलम रिपीट हो गए पर उसके नाम चेंज, थोड़े नेम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट का नेम चेंज रहेगा डेट, पर्टिकुलर का जो कॉलम है वो पेमेंट कॉलम कहलाएगा, देन जो रिसीप्ट का कॉलम था वो वाउचर नंबर हो जाएगा। ओके, देन LF नंबर और अमाउंट का कॉलम एज इट इज राइट करेंगे। ओके, यानी कि हम डेबिट साइड पे सारी रिसीप्ट्स राइट करेंगे और क्रेडिट साइड पे हम सारे पेमेंट्स राइट करेंगे। ओके, डेबिट साइड पे हम पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे क्लोजिंग बैलेंस पे। ये सिंपल बुक को चाहे कॉलमनर हो, हम दोनों कैश बुक ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस से खत्म करते हैं। ओके ओके, लेट्स सी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर एक्सप्लेनेशन वी काउंट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 से हम ये सिंपल कैश बुक को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 3। record the following transaction in the cash book of Prapti। There is first transaction is opening cash balance rupees 10,000। यानी कि हम पहले कैश बुक में प्रिपेयर करना है तो पहले उसका हेडिंग राइट करेंगे कैश बुक ऑफ श्री प्राप्ति। ओके, देन वी ड्रॉ देयर इज अ कैश बुक लाइक द स्पेसिमेन, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF यानी कि लेजर फोलियो number, amount, then credit side, date, payment, voucher number, ledger folio number and amount. Then we will record it. First, opening balance of is 10,000. It means cash comes here. Opening balance always debit balance. You keep in your mind. The
cash balance always debit side right. Okay, so we write down in date column 2015 June 1st and particular की column में receipts की column में write करेंगे to balance brought forward and amount की column में 10,000 rupees write करेंगे. Then second transaction is cash sales rupees 3,000. It means cash sales करेंगे तो हम cash comes in our business. So we recorded on debit side. It means कि on receipt side date में write करेंगे to और receipts की column में write करेंगे to sales account और amount की column में हम 3,000 rupees write करेंगे. Okay. Then number third transaction, cash of rupees 2,000 brought in the business as more funds are required. It means capital comes. Okay. So when we want to more require fulfill, that time cash brought by the businessmen. Okay. So cash comes in our business. So it is debited and it means that it is our receipt. So we write down on receipt side. Number 3 date में write करेंगे 3 और receipts की column में write करेंगे to capital account और कितनी लाया है तो 2,000 rupees लाए हैं. Okay. The next transaction is date number 5. Cash purchase rupees 6,000. It means हमने cash में purchase किया है, so purchase करते हैं तब goods comes और cash goes out. So cash is payment. So we write down on credit side. It means कि payment side. There is write down in date column first 2015 June 5th and write down in payment column by purchase account. Amount की column में 6,000 rupees write करेंगे. Now next transaction is June 7. Salary of rupees 1,000 and brokerage of rupees 1,500 paid by cash. It means कि ये दोनों हमारे expense है तो हमने expense तो pay किए होंगे ना, paid किए हैं. So it is recorded on credit side of cash book. It means कि payment side पे date में हम 7 लिखेंगे, पहले हम salary write करेंगे, then after we write down brokerage. Okay. So first column in maroon color. By salaries account 1,000 rupees. Then number 7 again write down in date column by in particular column यानी कि payments column में हम write करेंगे by brokerage account 1,500 rupees. Write down in amount column. Okay. यानी कि हम ये दोनों word separate write करेंगे, not to write together. Write together but separate. Okay. The next transaction is June 9. Goods of rupees 5,000 purchased from Dona by cash. यानी कि purchase किया so obviously our cash is goes out from our business. So we recorded on payment side. You decide first cash comes or goes. Then you will can easily understand where you write your transactions. Okay. So when the purchase that time cash always goes. So we recorded on payment side. There is write down in date column number 9 यानी कि date 9 है. Then in payment columns we write down by purchase account and amounts columns write down there 5,000 rupees. The next transaction is June 11 का है. Goods of rupees 6,000 sold to Mansi for cash यानी कि cash में हमने मानसी को goods sell किया है. Okay, sold किया है. So when we sold that time cash comes in our business. So always when we sell that time cash account debit ही होगा. So we write down on receipt side in that column 11 and in receipts column write down that to sell account और अब हम amount की column में 6,000 rupees write करेंगे. Okay. The next transaction is June 19. Rupees 3,000 paid to Nehruti for goods purchased in the previous month. यानी कि नेहरू के पास से हमें क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो उसका हमने भी पेमेंट किया है. So here our cash is goes out from our business. So we recorded on credit side. It means payment side. Then write down in date column
19, or in payments columns you write down there by rupees account and amount is 3000 rupees. The next transaction is June 23. Kinjal paid rupees 1500 for goods sold to her in the previous month. यानी कि हमने किंजल को goods सोल्ड किया होगा प्रीवियस मंथ में, इसके पहले मंथ में, तो उसने हमें अमाउंट पे कर दिया है। तो सोल्ड को किया था तो तब हमारा कैश कम्स इन अवर बिजनेस, so we recorded on debit side, it means receipt side. So that's why we recorded in cash books debit side in date column 23. In receipts columns we write down there to Kunj account and write down in amount column 1500 rupees. Now next transaction is June 25. Old cycles of ₹6 today is purchased for business. It means यहाँ पे हमने साइकिल परचेज की है कैश पे 600 रुपीज की, और जब भी परचेज करते हैं चाहे असेट्स हो चाहे गुड्स हो, बहुत कंडीशन में हमारी जो कैश है वो गोज आउट हो जाती है फ्रॉम द बिजनेस से। ओके, सो we recorded this transaction on credit side, it means payment side. Write down in date column 25. In particular column write down their by cycles account and amount में write करेंगे 600 rupees. The next transaction is June 28. rupees 1000 received toward commission, यानी कि हमें कमीशन मिला है। So obviously cash comes in our business. That time we recorded this transaction in debit side, it means receipt side, and there is write down in this column 28. In particular column यानी कि receipts column में write करेंगे to commission account और amount होगी हमारी 1000 rupees. The next transaction is June 13. Machines of rupees 3500 purchased from business. It means for business. It means यहाँ पे पर machine purchase किया है. Purchase it means our cash goes out from the business. So we recorded this transaction on credit side. It means payment side. There is write down in date column 30, and in payment columns we write down by machine account. And amount is 3500 rupees. Now here our whole transactions is finished. Then we close this cash book. And how to cash book close? See here. First we add credit side and debit side. We discussed in previous this video. What is discussed? Yes, debit side is more than the credit side. So first we add debit side, and debit side balance is 23,500 rupees. It is recorded in both sides, on debit side, on credit side. Okay, then we find out its balance, and it means the difference between debit side and credit side, and it is difference is 2,900 rupees, and it's called our balance. Okay, and write down that date. यहाँ पे जून मंथ है तो जून की लास्ट डेट आती है 30. सो वी राइट डाउन हियर 30, एंड इन पेमेंट कॉलम्स पे राइट करेंगे बाय बैलेंस CF. CF मीन्स कैरी फॉरवर्ड, हम आगे ले जाते हैं, और वो हमने यहाँ पे इसी कैश बुक में आगे कैसे ले जाते हैं वो भी दिखाना है कि 2015 जून के बाद कौन सा मंथ आता है, जुलाई 1st, और पर्टिकुलर की कॉलम यानी कि रिसीट्स की कॉलम में हमने राइट किया है टू बैलेंस BF. BF मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड, और अमाउंट की कॉलम में राइट किया है 2900. जो हमारा जून का क्लोजिंग बैलेंस था वही हमारा जुलाई का ओपनिंग बैलेंस होगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.